हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं तो राइट यो इन द चैट बॉक्स। जल्दी जल्दी यो लिख दो चैट बॉक्स में। आई एम टेकिंग दिस सेशन आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। जस्ट वांट द एंथुसियाज्म फ्रॉम ऑल ऑफ यू। Yeah, I can see a lot of you in the chat box. So great, we can start now. So, as everyone knows, this session is all about Eklavya, and we are going to talk about Eklavya. Eklavya है क्या, किसके लिए ज़रूरत है, किस टाइप के बच्चे और कब ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और एकलव्य में हुआ क्या है अभी तक। तो बच्चों excited? I hope everyone is excited because I saw a lot of chats and comments in the trailer video. So I will be talking about Eklavya in detail. But let's ask certain questions from you because this session is all about you and me talking to each other through the chat. So let me just start, and all of you who are actually attending me for the first time, I'm Anand Prakash, co-founder of Vedantu and master teacher of physics, and I have been teaching for the last 15-16 years. In the last 15-16 years, I have come across a lot of students, few students who were struggling to get even into JEE main or get into a 1 lakh in JEE main, and I pushed into through a right strategy to get into a top 10,000 rank, or someone who was at 10,000 rank into a 1000 rank in JEE advanced. So this is all about me. But आज मेरे बारे में नहीं, आज आपके बारे में है, और हम बात करेंगे कि exactly with this program how are you going to be benefited. तो बच्चों, let's simply jump to this particular question. How prepared are you? So let me start with this particular question. आप लोग कितने ज़्यादा prepared हो? आज कितने लोगों को लगता है you are confident enough to get into the JEE advanced or the top colleges of NEET? So just write yo in the chat box, and I will actually just look at the enthusiasm of this particular group who is watching this session live or who will be watching this session after the live session or watching it as a replay. So write yo or yes. I can see a lot of enthusiasm, and agar prepared ho, so it's a good thing. And what we'll do is we'll try to, through this program, we'll try to push your preparation very very high. मतलब आज अगर कोई बच्चा 10,000 पे बैठा है तो हम गारंटी लेते हैं कि उस बच्चे को मेहनत करके, आपकी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों मिलेगी, और विल ट्राई टू पुश यू इनटू टॉप 1000 रैंक, और इफ यू आर एट 1000 टुडे, विल ट्राई टू पुश यू टू अ टॉप 100 or a top 50 rank. So this is all about this program. Now let's exactly this question. Let me ask you this question again. What do you think is the top secret of scoring well in the exam? मतलब बच्चों, I am just looking at the chat and I will be looking at the comment box for all those who are watching in the replay. What is the top secret? What do you feel is the top secret to do well in the exam? Okay, revision, consistency, study hard. रिवीजन, कंसिस्टेंसी एंड स्टडी हार्ड. मतलब मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है यहाँ पे कि रिवीजन है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क है. मुझे लगता है इन सब के ऊपर एक और चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, वो है एक्सट्रीम. एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच एक्चुअली मेक्स अ टॉपर. और एक बच्चे को, मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो इट डजेंट मैटर वेदर यू नो द नॉलेज और यू हैव द नॉलेज, यू स्टडी हार्ड और नॉट, यू एक्चुअली आर नॉट फोकस्ड. एंड फोकस के बाद ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विच इज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट. बट द फर्स्ट very very important thing is focus. That can you remain focused in the last 6 months of your preparation, and that is extremely important. मतलब अभी तक की तैयारी, जो भी बच्चों ने तैयारी 11th में शुरू करी है, जो भी बच्चों ने 12th में तैयारी शुरू करी है, कई बच्चों ने 10th में शुरू कर दी थी, अभी तक की तैयारी is something which actually has given you knowledge, but the last 6 months of your preparation is going to shape what you are going to become and what rank you are going to get. And this 6 months is the most critical time, and where you require the utmost focus, where you require a self time without any mobile phone, without any chat, without any internet. That self study time should be all your मतलब it should be completely with focus, and उस समय कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई विल टेल यू, विच एक्चुअली मेक्स अ स्टूडेंट a top student or someone who scores very very well, is your focus, and then use hard work, and then is the revision. And this last 6 months of your preparation is going to actually tell you whether you have it or not, because I have seen students doing miracle.
lot of students ask me this question, sir abhi tayari shuru kariye. Of course JEE Advanced is something that if you start today, it is not going to happen. It's not going to be easy. It can happen, but it is going to be extremely tough. But definitely you can score very, very high in the last 6 months if you are strategic enough, if you focus on certain key areas. And in JEE Advanced, if you really want to score very, very high, you really need actually to pick up good topic and focus on that. And if you really want to score very good in your NEET exam, then you need to actually cover the entire syllabus and revise it again and again. So multiple cycles in NEET exam, very high focus and limited topics in JEE Advanced, and that too going in depth. You can't be superficial in that. And for JEE Main, you need to actually revise what was asked in your last year paper between 2019 and 2000. So this is going to be the strategy, but today is not about strategy. Today is about the Eklavya program. So let me quickly jump to the Eklavya program. So basically, this is what I was talking about. Your preparation journey until now and upcoming 6 months. This is all the difference which is going to be made. And we have seen in the past, in the last 2 years, Eklavya was launched in 2018. The first batch was launched in 2018 with only a handful of students. And that year we got a 300 something rank as the top rank. And that student had no preparation. He did not take any coaching institute. He actually prepared on self before joining Eklavya program, and he got a 300 odd rank in the JEE Advanced exam in the first Eklavya batch. Then the second Eklavya batch, we had miracle, because in the second Eklavya batch, we pushed a student from a 600, 700 rank to a top 50 rank. And that was the year where actually Eklavya was completely established. A lot of students took faith in Eklavya. They actually joined the Eklavya program from all over the country, including our own students. And that was the starting point of Eklavya in 2019. And then 2020 happened, 2021 happened, and every year we have phenomenal results. And last year it was year of magical results, because we were able to push ourselves, push our boundaries, and get to a massive rank. So let me just quickly talk about few of the success stories of 2019 and 20. You can look at Chirag Jain. Chirag Jain mains rank was 731. When he joined Eklavya program, his rank moved from 731 to a 41 rank. Now Sumit, he was at 982 rank, and he got All India rank 1 in the PWD category, and also in actual general category he got a 400 some odd rank. So that was Sumit Jain. And similarly, you can see a lot of students, their name is written and their year is written, and everyone improved. In fact, you can look at Aditya. He was at 14,000 rank in JEE Main. He was able to get a 1300 rank through the Eklavya program, and that too within 6 months time. So a magical year, but last year was even magical. So if you look at 2021, it was a magical year, because we actually improved the rank from 243 to 35, 533 to 78, 225 to 137, and so on. So ranks massively improve हुए थे. और you can look at lot of comments जो बच्चों ने अपना प्यार दिया हमें. मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया लास्ट ईयर, उसके बाद एकलव्य के बाद, एंड यू ऑल हैव सीन द टेस्टिमोनी, यू हैव सीन द फेलिसिटेशन प्रोग्राम, आप लोगों ने लाइव देखा था, एंड क्लियरली यू कैन सी दैट वी हैड 1500 प्लस सिलेक्शन. मतलब मैंने आपको टीजर में बताया था कि हमने 1000 का टारगेट लिया था. हमने सोचा था कि क्या हम 1000 क्रॉस करेंगे, बट 1500 प्लस सिलेक्शन इन जेईई एडवांस एग्जाम वाज फिनोमिनल. एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय टीचर्स, एंड जो बच्चों ने मेहनत करी थी, मतलब जितने टीचर्स ने मेहनत करी, बच्चों ने मेहनत करी, उसका नतीजा था 1500 प्लस रैंक. मतलब दिस वाज फिनोमिनल. दीज वर द फ्यू ऑफ द रिजल्ट्स. नीट में 1172, मतलब मैसिव रिजल्ट. मैं इसकी बात ज़्यादा नहीं करूँगा, because we have all talked about the NEET result, what happened. These are few of the comments जो एकलव्य में बच्चों ने लिखा है. अगर आपको और जानना है डिटेल में कि एकलव्य प्रोग्राम क्या है, उसमें क्या होता है, you can go on Quora, search for Eklavya and you will get details of Eklavya program. मतलब आपको बच्चों के द्वारा कमेंट्स लिखे हुए, जिन बच्चों ने एकलव्य प्रोग्राम लिया है उनके कमेंट्स आपको दिख जाएंगे कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं. क्योंकि मैंने देखा है जो सोशल मीडिया है, इट टॉक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बच्चे कुछ भी बात करते हैं. मतलब देयर आर लॉट ऑफ नॉइज इन सोशल मीडिया, देयर आर लॉट ऑफ कचरा इन सोशल मीडिया. मतलब बहुत सारी नॉनसेंस बातें भी होती हैं. सो बेसिकली फॉर योर फैक्ट चेकिंग यू कैन गो टू Quora, you can directly search for Eklavya program and you can actually find
what students have written about the Eklavya program, about us, about the love that they had for the Eklavya program, and the improvement that they have seen in themselves through this Eklavya program. So, and these were few of the students. Matlab, Arav was our last year student. He wrote even in the testimonial. मतलब आप YouTube के वीडियो जो अभी टीजर वीडियो था उस पर कमेंट में लिखा उसने, काफी डिटेल में लिखा है कि एकलव्य में when he joined Eklavya, and Eklavya is for both internal students जो भी वेदांतु के long term students है, it's a last 6 months preparation. So Eklavya is nothing but a last 6 month preparation free of cost for JEE Advanced and NEET only for those students. वो क्राइटेरिया भी हम बताएंगे कि कुछ बच्चों के लिए जो कि अभी 95, 96, 97 कुछ ऐसे परसेंटाइल आते हैं, बट उससे पहले क्या होगा वो सब अभी थोड़ी देर में बताएंगे आप लोगों को. So these were few of the टेस्टिमोनियल जो बच्चों ने लिखा हुआ है. यू कैन गो एंड एक्चुअली रीड अबाउट देम. तो बच्चे जब बोलते हैं, खुद आप जब बोलते हो, तो उसका ट्रस्ट हमारे बोलने से कहीं ज़्यादा होता है, एंड दैट इज एक्चुअली द लव, एंड जिसकी वजह से हम और मेहनत करते हैं. एंड देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य जो लास्ट ईयर के थे और लास्ट टू लास्ट ईयर के थे, आई वुड इनकरेज यू टू राइट मोर टेस्टिमोनियल्स ऑन कोरा एंड ऑन दीज वीडियो. नाउ द क्वेश्चन, कैन यू टॉप स्कोर well in the exam? My simple answer is yes. मतलब मेरा बहुत आंसर है कि अगर लास्ट 6 months में if you determine yourself that you are going to do great, you are going to do. The problem is lot of students, I read most of the comments. In fact, I read almost 90-95% of the comments जो आप लिखते हो, जो भी मैं वीडियो करता हूँ उसमें तो 100% comments read करता हूँ. And I've seen few students writing, सर इतने व्यूज आ गए हैं, सबका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा. तो बच्चों मैं केवल एक ही चीज बोलूंगा, देखता हर कोई है, फॉलो बहुत कम लोग करते हैं. Everyone watches the video, but there are only few who follows it. And anyone who follows what we are going to tell you, they get selected. It's a very simple fact. So clearly, you can actually ask yourself how many of you are going to follow what I am going to tell you and what we are going to tell you in this program. So anyone who follows it is going to do massive improvement, and will see the massive improvement, and next year you will be talking about this program to your juniors. Trust me on this. So with this, I will not take much of the time. We are launching Eklavya this year for JEE and NEET 2022, and I'm extremely happy, and I will tell you exactly what makes this program so special. What makes this program so special? सबसे पहले तो दिस प्रोग्राम इज फॉर द लास्ट 6. एनीवन, हमारे अपने बच्चे ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा मिलेगा इस प्रोग्राम में एडमिट होने के लिए, और जो बच्चे बाहर के हैं, इस प्रोग्राम में आप आते हो एक सोच के, एक डिटर्मिनेशन के साथ. यू कम विथ वन डिटर्मिनेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन रैंक. वी टेल आवरसेल्व्स दैट अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टिंग लेट्स से 1000 रैंक. Can we push the student to 100 rank? And that is the question that we ask ourselves, and we are actually enthusiastic about that. We will actually push any student who is at 1000 to 100 rank. Anyone who is at a 10,000 to 1000 rank. This is what we talk to ourselves, and our teacher, जितने भी master teachers हैं आपके, they actually take this pledge that if you are going to put 1 hour, they are going to put 2 hours. मतलब आपसे डबल मेहनत करेंगे. आप करके तो दिखाओ. आप 12 घंटे करोगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे. आप रात के 2 बजे क्लास ढूंढोगे, वो 3 बजे तक क्लास लेंगे. मतलब दिस इज हैपेंड इन द पास्ट, एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट, एंड देयरफॉर आई वुड लव टू एक्चुअली इनवाइट टू टॉक अबाउट दिस एकलव्य प्रोग्राम द गॉडफादर ऑफ एकलव्य, विकास अग्रवाल सर, बिकॉज ही इज बीन द करता धरता ऑफ एकलव्य. ही इज एक्चुअली मतलब गिवन द शेप टू एकलव्य. तो प्लीज बच्चों, ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू विकास सर, बिकॉज मतलब मैं यहाँ पे सोचता हूँ, मैं इनसे बोलता हूँ कि सर मुझे इतनी रैंक आएगी क्या, एंड ही सेज सर आप चिंता मत करो, बस ये आ गई. एंड इनका एक बार कहना, एंड दैट इज वेयर आई फील आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम हम्बल्ड टू हैव टीचर्स लाइक विकास सर हु एक्चुअली पुट इन हार्ट एंड सोल इनटू द प्रोग्राम. एंड मतलब इनके साथ जो पूरी टीम है ना, मतलब वो हार्ट एंड सोल, मतलब आप जो भी इमेजिन कर सकते हो उससे ज्यादा मेहनत करते हैं. दे आर द अटर मोस्ट फोकस. मतलब देयर इज नो हॉलीडे फॉर दीज टीचर्स. मतलब अपने आप ही, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ सर 2-4 दिन छुट्टी ले लो आप, मतलब एंड दे डोंट टेक दैट. मतलब दैट इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट
that these guys do put, and therefore that makes this entire program so. हेलो बच्चों, तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आता नहीं हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये पूरा यूट्यूब. एंड आई थैंक यू आनंद सर फॉर appreciating all the hard work that our team puts in and for recognizing the hard work that students also puts in. So I believe ये वाला जो सेशन है ये बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे यूट्यूब के काफ़ी सारे चैनल्स पे हो रहा है. तो हाय बच्चों, मैं कई सारे चैनल्स के बच्चों से आज पहली बार रूबरू हो रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके. तो बच्चों, मैं एकलव्य प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, जो कि अभी हम कुछ डिटेल्स बताएंगे एकलव्य प्रोग्राम के बारे में. और एपी सर ने अभी तक जितनी भी बातें बताई आपको एकलव्य के बारे में, आई वुड से कि उनको सुन के ऐसा लग सकता है कि दिस कांट बी ट्रू, या थोड़ा अनबिलीवेबल सा लग सकता है. तो व्हाट आई कैन से राइट नाउ इज कि यू विल बिलीव इट वंस यू एक्सपीरियंस इट. ना मतलब तुम लोग ज्वाइन करोगे, तुम लोग यू विल लिव थ्रू दिस एक्सपीरियंस एंड देन यू विल बिलीव इट, एंड आई एम प्रीटी श्योर that you will then recommend this program to your juniors, to your relatives, to your friends. And in fact, अगर अभी तुम्हारे टच में कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर इस प्रोग्राम को यूज किया था, इसमें एनरोल किया था, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम, टू गेट देयर फीडबैक फ्रॉम दिस प्रोग्राम. मतलब उनका जरूर पता करिएगा इस प्रोग्राम के बारे में. यू विल कम टू नो. तो वही मैंने बोला कि बेस्ट वे टू नो अबाउट द प्रोग्राम इज टॉक टू द, एंड अगर आप बात नहीं कर सकते तो देयर इज कोरा प्लेटफॉर्म, देन देयर इज यूट्यूब प्लेटफॉर्म, यू कैन एक्चुअली सर्च एकलव्य एंड यू विल फाइंड इट अबाउट इट. सर, who can enroll, and बच्चों, if you are asking about JEE and NEET, this is for both JEE as well as NEET, and sir will talk about enrollment process. Sir will talk about आप इसको आगे मतलब इसके फॉर्म कैसे फिल करेंगे, सब कुछ अभी आपको सर बताएंगे. सर आप. सर तो गाइस, सबसे पहले एकलव्य प्रोग्राम किसके लिए है मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ. हो सकता है कुछ यूजर्स ने अभी ज्वाइन किया हो, कुछ ने शायद नाम भी पहली बार सुना हो एकलव्य का. So guys, this program is for students who are currently enrolled in 12th grade and they would be writing the JEE or the NEET exam of 2022. ठीक है, आप हो सकता है कि ड्रॉपर भी हो. ठीक है, so anyone who is aspiring to write the exam of JEE 2022 or NEET 2022, आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम है. अब इस प्रोग्राम में एनरोल कैसे करना है मैं जल्दी से ये बताता हूँ. तो इसमें एनरोल करने के लिए for now what we have done, we have we are going to conduct entrance tests. ठीक है, तो इन एंट्रेंस टेस्ट को आपको टेकअप करना है, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द टेस्ट you will be enrolled in these batches respectively for JEE and NEET. So how to appear in the test मैं अब उसके बारे में बताता हूँ. So जितने भी स्टूडेंट्स JEE एकलव्य का पार्ट बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये दो लिंक, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, ये दो लिंक रेलेवेंट है. आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू अ रजिस्ट्रेशन पेज जहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल दो, अपनी ग्रेड डाल दो, एंड देन यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर द टेस्ट. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको करना है, आप वहां पे वही ईमेल आईडी डालिएगा जिससे आपने अपनी वेदांतु आईडी रजिस्टर कर रखी हो, यानी कि vedantu.com पे आपका जो लॉगिन आईडी है, यूज दैट ईमेल आईडी ओनली. ठीक है, और अगर अभी तक vedantu.com पे लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो पहले वो क्रिएट करो. गो टू www.vedantu.com, वहां पे अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करो एंड यूज दैट टू रजिस्टर योरसेल्फ हियर. ठीक है, दिस इज फॉर जेई. अगर आप नीट के लिए अपीयर करना चाहते हैं और नीट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, नीट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो ये जो नीचे लिंक दिख रहा है, यूज दिस लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ नीट एकलव्य. ठीक है, तो ये हो गई टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करने की बात. इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ये जेई एकलव्य का और ये नीट एकलव्य का, इनको ज्वाइन कर लो. इससे ये होगा कि एंट्रेंस प्रोसीजर से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी. तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, कीप विजिटिंग दीज चैनल्स. यहाँ पे आपको जितना भी अनरेड मैसेजेस दिखे, डेफिनेटली गो थ्रू दोज अनरेड मैसेजेस, बिकॉज वहां पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई नोटिफिकेशन होगा, एंड यू विल कम टू नो कि हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द एंट्रेंस प्रोसीजर. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. थोड़ा सा मैं और समराइज कर देता हूँ. इसका जो टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है, वो होगा 2 जनवरी को. जेई का भी 2 जनवरी को है, नीट का भी 2 जनवरी को है. तो उस डेट को आपको टेस्ट देना है. टोटल ऑफ 3 टेस्ट विल हैपन. One on 2 January, the second test will be on 10th of January, and the third test will be on 17th of January.
10th and 17th आर मंडेज को इसलिए रखा है क्योंकि संडेज को कोई ना कोई एग्जाम हो रहे हैं, सो स्टूडेंट्स ऑक्यूपाइड रहेंगे. 2nd January इज अ संडे, सो दोज ऑफ यू हु आर विलिंग टू टेक द टेस्ट ऑन संडे, डू नॉट मिस द डेट ऑफ 2nd January. And if you are occupied on Sunday due to whatever reasons, you have 2 Mondays to take up the test, 10th January and 17th January. Okay, these dates are applicable for JEE also and NEET also. The test paper will not be common, the test paper will be different. The registration process is also different. ठीक है, जो JEE के लिए रजिस्टर करेंगे वो केवल JEE के टेस्ट में अपीयर होंगे, जो NEET के लिए रजिस्टर करेंगे वो केवल NEET के टेस्ट में अपीयर हो पाएंगे. राइट, तो ये हो गई पूरी प्रोसेस. टेस्ट क्या तीनों देने हैं? नहीं, आप 3 में से चाहो तो 1 दे दो, चाहो तो 2 दे दो, चाहो तो तीनों दे दो. आपकी जिस टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी, वी विल कंसिडर दैट परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी ऑफर्ड अ सीट इन एकलव्य. राइट, सो what I can promise from team Eklavya is 100% commitment from all the team members. मैं ये चीज क्योंकि I have lived it, so I can promise it कि जैसा अभी सर बता रहे थे, AP सर बता रहे थे कि अगर आप लोग 1 घंटे की मेहनत करेंगे तो हम लोग 2 घंटे की मेहनत करेंगे एंड यू जस्ट बीट दैट. मतलब आपको सेलेक्ट होना है, आप हमारे टीचर्स के बराबर एफर्ट डाल दो. आई गारंटी कि आपको जो आपका बेस्ट रिजल्ट आ सकता था या आपका जो पोटेंशियल था उसको हम ऑप्टिमाइज कर देंगे, उसको हम एकदम एक्सट्रीम तक ले जाएंगे. सो दैट इज माई प्रॉमिस टू यू एंड दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माई एंटायर टीम टू यू. सो विद दैट आई विल जस्ट टेल वन मोर थिंग कि एकलव्य के बारे में सारी डिटेल्स लेकर एक और सेशन होगा जिसमें आई विल बी टेलिंग यू कि एकलव्य में क्लासेस कैसे होंगी, कितने टेस्ट होंगे एंड पूरी थीम क्या रहेगी एकलव्य की. तो विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट, बट उसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन करेंगे रेस्पेक्टिव JEE एंड NEET चैनल्स के ऊपर. सो विद दैट आई गेस द story for Eklavya is over and I would like to call Anand Sir to continue. So I hope everyone is excited about it. Write you in the chat box बच्चों अगर excited हो, because हमारा मानना है कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आप लोगों का. We just needed you to prepare for the exam. We needed you to be committed for the exam. And what we are requiring here, जो सर ने अभी बोला है, 100% आपका commitment. So write you in the chat box अगर आप excited हो, and we will see you all in the Eklavya program. उस पर मेहनत करो. देयर विल बी लॉट ऑफ चांसेस यू विल गेट द चांस आफ्टर द February एग्जाम ऑल्सो. तो अभी तो बिकॉज एग्जाम नहीं हुआ है JEE मेन का, NEET का एग्जाम तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो एंट्रेंस एग्जाम ही होगा और JEE के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा. इंपॉर्टेंट थिंग इज you need to be honest in the exam, you need to be very very sincere in the exam, because ultimately Eklavya program is for the most sincere student and it is not about whether you are the topper or not. टॉपर हो, अगर आप 100 लाने की पॉसिबिलिटी रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो, विल एंश्योर दैट यू विल गेट इनटू टॉप 10. इफ यू आर अ टॉप 10 कैपेबल स्टूडेंट, यू विल गेट दैट रैंक एंड विल एक्चुअली ट्राई टू पुश यू टू टॉप रैंक 1. तो बच्चों, दिस प्रोग्राम इज टू एक्चुअली टेस्ट योर हार्ड वर्क and therefore anyone who is not sincere should not join the program. This is for the most sincere student. It is not only about the topper, it's about the most sincere, someone who is dedicated, who wants to dedicate and who wants to be focused, and someone who wants to commit himself or herself for the next 6 months. So this program is for all of them who wants to be who wants to commit. सर बच्चों को मैं कमेंट पढ़ रहा था, 2 चीज़ें मैं एड्रेस करना चाहूँगा क्योंकि वो एक बच्चे ने पूछा, बट काफ़ी बच्चों की क्वेरी हो सकती है. एक बच्चे ने पूछा था, इज दिस प्रोग्राम फ्री और इज दिस अ पेड कोर्स? गाइस, एकलव्य, JEE एंड NEET, दे बोथ आर एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज. लाइक यू डोंट हैव टू पे अ पेनी. ठीक है, 1 रुपया पे नहीं करना है, बट वी वांट योर कमिटमेंट. ठीक है, कमिटमेंट तुम्हारा बिल्कुल चाहिएगा, उसके बिना इसमें एनरोलमेंट नहीं हो सकता. तो इट्स एन एब्सोल्युटली फ्री प्रोग्राम. एंड एक बात सर ने भी कही थी कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द टेस्ट. तो इसको लेकर मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा. गाइस, टेस्ट का जो भी टाइम दिया गया होगा, ठीक है, स्टार्ट टेस्ट विद इन 15 मिनट ऑफ द स्टार्ट टाइम. ठीक है, एनीवन हु स्टार्ट्स टेस्ट एट अ लेटर टाइम मे नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनरोलमेंट. सो रिमेंबर दिस कि अगर जैसे टेस्ट 10 AM पे है तो आप 10 AM to 10:15 AM इस बीच में ही टेस्ट को स्टार्ट करें. ओनली दीज रिजल्ट्स विल बी कंसिडर्ड. So yes, something. So I will just translate it into English because a lot of students are asking to actually speak English. So the test timing is fixed. It is only flexible for first 15 minutes. Post that, you can give the test, but your marks will not be considered. So please be on time to give the test. Be sincere because you have to optimize and get more marks.
And a lot of students were asking, what about the internal students of Vedantu, long-term students of Vedantu? So this program is for internal as well as the crash course student, and they will get little relaxation in this particular program. So let's say if a student scores 100 and 100 is the cutoff for the exam. So for internal student, the cutoff may be around, I'm just taking a hypothetical number, don't put it, but it can be around 80 or 75. So for internal long-term student or internal, because they have been with us, so they will get little relaxation to enter into Eklavya program, and we will and therefore because we have been working hard, we know that you will definitely qualify, and please try to qualify in this exam, and we'll also push you harder in the last 6 months. So be ready for that last 6 months. Now it's very important for all those who could not make into this program. तो जो भी बच्चे इस प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, all those who can't join this program, you need to join the crash course, because definitely if you can't join the this particular program, you actually are not prepared for JEE main, because we are taking this exam on the basis of JEE main, similar to JEE main exam, and our entrance test will be somewhat similar to that, and therefore we will actually, and when I say not prepared for JEE main, I'm saying that you are not actually above a certain qualifying marks, which is approximately 95 or 96 percentile. So clearly आप उससे नीचे रहोगे, and we will want you to push above 96 percentile, and therefore want everyone who cannot join this program to join the crash course, because through that we'll again work harder so that you can actually join the Eklavya program maybe after the February exam. We'll push you to get more than 96 percentile, 97 or 98 percentile in your JEE main exam, in the February exam through the crash course, and from there we can actually again, you can join the Eklavya program after your February attempt, or whenever the attempt is. So date is not announced, but whenever the attempt is, you can actually do that. So crash course की information कुछ ऐसी है कि मतलब of course you know the crash course, and you have actually been looking at, lot of teachers have been talking about. Definitely there is lot of massive improvement. Crash course is both for JEE as well as, and it is for mains. It is not for advanced. Anyone getting more than a certain percentile in crash course, and in fact last year हमने cut off 96 रखा था बाहर वालों के लिए. So for internal student it is around 94. So for 94 and above students will be selected. So we'll try to actually ensure that you get more than 94 percentile. We'll try to push you to get more than 94 percentile, 95 percentile, or wherever you are, to actually improve your marks through this crash course. And the entire syllabus will be covered with 10 full test and 10 part test. So in this crash course, it's at 8,000 rupees, and you have to apply the coupon code APCC. जो भी आप ये coupon code apply कर दो, link यहाँ description में दिया हुआ है. डिटेल में आप खुद जाके इस क्रैश कोर्स को देख लेना, कौन से टीचर्स, कितने दिनों की क्लासेस. दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन टू एक्चुअली मैक्सिमाइज योर मार्क्स फॉर JEE मेन और नीट एग्जाम. So it is not for JEE advanced. It is also not for those who are targeting a top 500 or top 100 in NEET exam, but it is definitely for someone who will actually get in a top 1000 of NEET exam, top 3000 of a NEET exam, or a 95, 96, 97 percentile के ऊपर JEE main में आपको push कर देगा. So basically anyone who is at 96 and below percentile today in their preparation, it is a must program. It is such a good program because the entire syllabus is revised. It will be focusing on the most critical topics as well, giving more time to it, and there is a comprehensive test which will actually test you on the similar patterns of JEE main, because we have gone through the JEE main in detail. We understand what is going to be asked, and last year बहुत सारे question as it is repeat भी हुए थे in the JEE main exam which were taught in the class. So the concepts are going to be repeated, and therefore this program is must to improve your mark and percentile. So with this, I would like to thank all the students for watching this, who will have watched this or who will watch the replay, and I really want to wish all the best. Really work hard for the 2nd January exam. It is very important, and join the link, मतलब जो भी आप register कर लो, and all the information will be shared. But sir has something to say. Yes, sir. Sir, I would like one point that Eklavya program will run in Hindi as well as English language. Like, just because I spoke Hindi, so do not interpret that the English Hindi will be the medium of instruction. We'll have both kind of batches in which English will be the exclusive language, and batches in which teachers will be speaking Hindi as well as English. So that is one point.
The second point, sir, let me understand what we are saying regarding Eklavya and crash course. Like, so what I understand is that in Eklavya program, we prepare students who are certain of their JEE main selection, and we prepare them for advanced exam. Yes. Right. So all those students who are certain that they are going to perform well in their JEE mains exam, they should go for Eklavya. They should try to enroll in Eklavya. And if you are not that confident, or if you are confident but you realize after taking the entrance test that there is a shortcoming, like you are not up to the mark yet, then you should enroll for our crash course. And what we'll do, we'll take your preparation in two steps. Like, first we'll ensure that you are able to secure a good percentile in JEE main through the crash course, and once you are there, then we'll hold your hand, we'll enroll you into the Eklavya program, and we'll ensure that you get selected in IIT and you get a decent enough rank to secure a seat at IITs. So this is what I understand the gist of the session is. And there are a lot of students who are asking कि क्या internal बच्चों को exam देना होगा? Yes, everyone has to go through the exam, because this exam is also for internal student also. It is a window for you to showcase how well you are prepared, and of course the cutoff will be little less for you guys, but you don't have to worry about the cutoff. You just have to go and give the exam. And as Sir said, the biggest difference is one is going to prepare you for JEE Advanced, who right now, because we expect all those who are targeting JEE Advanced, they should not lose their focus because of JEE main. Because of JEE main, lot of students I have seen, even the toppers, they waste a lot of time these 2-3 months, which is extremely critical, because as I said, the last 6 months is actually will let you know whether you are going to get a 100 or a 200 or a 500 or a 5000 rank, depending on your capability. Your capability may be 500, but you may end up getting 5000 because you wasted your precious time in preparing for JEE main. So anyone who is short, who is already prepared for JEE main, should only focus on JEE Advanced. Anyone who is actually, and therefore the cutoff is made in such a way that anyone who is around 96 percentile at this point of time, we actually encourage those students to start preparing for JEE Advanced right away. सर, JEE के लिए ये क्रैश कोर्स है. हाँ. नीट के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए एक्चुअली जो आपके बायोटॉनिक चैनल पे या नीट मेड इजी चैनल पे टीचर्स ने आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां के लिंक में आपको JEE नीट का आपको मिल जाएगा. सो एनीवन हु इज वाचिंग ऑन नीट मेड इजी और बायोटॉनिक, आप वहां डिस्क्रिप्शन में देख लेना. आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पे भी नीट के लिए अलग से क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा. एंड दिस इज फॉर JEE मेन. आपको नीट का वहीं पे अभी डिस्क्रिप्शन में इस सेशन के बाद हम डलवा देंगे. So with this, all the very best. टेस्ट का सिलेबस इज कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th. जो JEE मेन का सिलेबस है वही आपके टेस्ट का सिलेबस है. तो बच्चों, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सेशन लेकर. आई होप you enjoyed the session also, and you liked the information that was shared also. With that, I also bid you farewell. Bye bye guys, take care, and I hope that you appear in the test in large numbers and we are able to select you in large numbers. So take care, students. All the best. Bye bye. Tata. मैंने जब चेक किया था तब तो दो अलग अलग